So hey everyone, welcome back to my channel Legalites Hub. I'm Kanak Shukla and this is the 7th lecture in the series of Law of Torts. In today's video, we are going to cover the topic malicious prosecution. So let's start the video. So this is basically the table of contents and these are the topics which I'm going to cover in today's video. First, that is what is malicious prosecution, essential elements of malicious prosecution, important case law related to malicious prosecution and illustrations related to malicious prosecution. Let's begin with our first topic, that is what is malicious prosecution. So malicious prosecution means institution or commencement of criminal or bankruptcy proceedings without reasonable and probable cause. Such prosecution causes actual damage to the party prosecuted. It is considered a tort of malicious prosecution and the person can get compensation for the same. So malicious prosecution basically means when there is an institution or commencement of criminal or bankruptcy proceedings or without reasonable and probable cause. And such prosecution causes actual damage to the party prosecuted. It is considered a tort of malicious prosecution. So basically malicious prosecution means क्या होता है कि जब किसी के against कोई criminal bankruptcy proceedings commence हो जाती हैं या इंस्टीट्यूट हो जाती हैं रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज के बिना और उस प्रोसिक्यूशन की वजह से उस पर्सन को डैमेज होता है जो कि प्रोसिक्यूट किया जाता है इन दीज प्रोसीडिंग, तो दिस विल अमाउंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और उस पर्सन को कंपनसेशन मिलती है फॉर दीज फॉल्स प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम और हर. Malicious prosecution occurs when someone initiates legal action against you without proper justification for purposes of intimidating, harassing or otherwise causing you harm. It could include someone filing an unjustified lawsuit against you or pursuing baseless criminal charges against you. So malicious prosecution मतलब ये होता है इन सिंपल वर्ड्स कि जब कोई आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन इनिशिएट करे जिसके पास कोई भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना हो उस पर्पस के लिए और उसने ये चीजें सिर्फ इसलिए करी हो जस्ट आपको इंटिमिडेट करने के लिए या हैरेस करने के लिए या आपको हार्म पहुंचाने के लिए और जिसकी वजह से आपको डैमेजेस हो. Compensation for malicious prosecution can include payment for actual loss as well as for non-economic damages you endured. This could include payment for costs incurred fighting to frivolous claims against you, loss of your reputation, medical bills if you experience physical harm due to the stress of the court proceedings, lost time spent fighting the case, lost wages due to reputational damage or time spent on the case, emotional distress. आप कौन कौन से डैमेजेस रिकवर कर सकते हो, कॉस्ट इनकर कर सकते हो जो कि एक फेक केस को फाइट करने में लगी हो, या आपकी जो रेपुटेशन का लॉस हुआ है उसके लिए आप कॉस्ट इनकर कर सकते हो, या जो मेडिकल बिल्स आए हो जो आपको मेंटली और फिजिकली हार्म हुआ हो, या तो आपको केस लड़ने में जो टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए भी आप कॉस्ट ले सकते हो या डैमेजेस ले सकते हो, और या आपकी जो सैलरीज या वेजेस हैं जिनका लॉस हुआ है क्योंकि आपको रेपुटेशनल डैमेज हुआ था और आपने टाइम स्पेंड करा था केस में, वो भी आप फाइल कर सकते हो केस उनको रिकवर करने के लिए, या आपको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ हो उसके लिए भी आप केस फाइल कर सकते हो. So let's move forward. The next topic is essentials of malicious prosecution. So there are basically 5 essentials of malicious prosecution. First is plaintiff was prosecuted by the defendant. Second is the earlier prosecution was terminated in his favor. Third, the defendant had acted without reasonable and probable cause. Fourth, defendant was acted under malice in fact. Fifth, the plaintiff suffered damage to person, property or reputation. So let's move to our next topic, that is important case law related to malicious prosecution. Dattaraya Pandurang Dattar versus Hari Keshav 1943. Case facts are, for the previous 10 days the plaintiff had been employed by the defendant in his jewelry business. However, the following day there was a robbery at the shop and the plaintiff had not shown up. As a result, the defendant and the plaintiff had not shown up. As a result, the defendant filed a police report citing the plaintiff as servant as a suspect in the theft following an inquiry. तो केस फैक्ट्स ये हैं कि 10 डेज के लिए जो प्लेंटिफ था वो वर्क कर रहा था डिफेंडेंट की ज्वेलरी शॉप में, बट नेक्स्ट डे क्या होता है जब रॉबरी होती है उस शॉप में तो उस दिन जो प्लेंटिफ होता है वो एब्सेंट होता है, वहां पे वो प्लेंटिफ नहीं आया होता है.
जिसकी वजह से जो डिफेंडेंट होता है वो केस फाइल कर देता है पुलिस में, और वो ये बोलता है कि उसे सर्वेंट पे शक है कि उसने ही थेफ्ट किया है और रॉबरी करी है उनकी ज्वेलरी शॉप में। अब इसके लिए जो प्लेंटिफ होता है वो केस फाइल कर देता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट कि उन्होंने फॉल्स प्रोसीडिंग्स फॉल्स प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी हैं प्लेंटिफ के अगेंस्ट। So यहाँ पे कोर्ट क्या जजमेंट देता है? The court held that this will not amount to malicious prosecution as the shop owner defendant has reasonable and probable cause against the plaintiff because of his absence on the day of robbery. तो है एसेंशियल्स में कि उसके पास कोई प्रोबेबल और रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए, बट यहाँ पे डिफेंडेंट के पास एक प्रोबेबल और रीजनेबल कॉज था बिकॉज वो 10 डेज से काम पे आ रहा था, बट नेक्स्ट डे जिस दिन रॉबरी हुई थी उसी दिन वो शॉप पे नहीं आया। तो दिस विल नॉट अमाउंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज illustrations related to malicious prosecution. So these are that I hope with these illustrations this topic will be more clear to all my legalites out there. First is an unscrupulous prosecutor filing false charges against a political rival. कोई दो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं, उनमें से एक क्या करता है फॉल्स एलिगेशंस लगा करके जस्ट फॉर द राइवलरी वो क्या करता है केस फाइल कर देता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये क्या होगा? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा, क्योंकि आउट ऑफ मैलिस हुआ था, प्रोबेबल और रीजनेबल कॉज भी नहीं थी, और यहाँ पे लास्ट में अगर कोई प्रोबेबल कॉज नहीं होगा और मैलिस इन फैक्ट होगा तो प्रोसिक्यूशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट। सो दिस विल अमाउंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सेकेंड क्या है? कॉर्पोरेशन फाइलिंग अ फ्रिवोलस लॉसूट अगेंस्ट अ स्मॉल बिजनेस इन ऑर्डर टू टेक आउट द कॉम्पिटिशन। तो एक कॉर्पोरेशन होती है जो कि फाइल करती है एक फेक प्लेफुल लॉसूट अगेंस्ट अ स्मॉल बिजनेस द रीजन टू टेक आउट द कंपटीशन, मतलब उसे कंपटीशन से बाहर करने के लिए वो क्या कर देते हैं, उनके उस स्मॉल बिजनेस के अगेंस्ट फेक लॉसूट फाइल कर देते हैं। सो दिस विल आल्सो अमाउंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। थर्ड क्या है? लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स चार्ज यू विद अ क्राइम टू कवर अप पुलिस मिसकंडक्ट। तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो आपको ऊपर चार्जेस लगा देते हैं जस्ट टू कवर अप पुलिस मिसकंडक्ट। कोई पुलिस मैन है, उसने कोई मिसकंडक्ट करा है, उसको कवर अप करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगा देते हैं विद अ क्राइम। दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। फोर्थ क्या है? अ बिजनेस राइवल फाइल्स अ लॉसूट अगेंस्ट यू फॉर फ्रॉड इन ऑर्डर टू ruin योर कंपनीज रेपुटेशन। एक कोई बिजनेस राइवल है आपका जो आपके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगा देता है फ्रॉड के, जिससे वो क्या करे, जिससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाए। सो दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। I hope this topic of malicious prosecution is clear to you all. I hope my videos are helping all my legalites out there, and they are having command on these topics by watching my videos. That's all for today. Thanks for watching, and please guys don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please also press the bell icon so whenever I will upload a new video in the series of Law of Torts, you will also get a notification for it. So yeah, keep loving, keep supporting, and thanks for watching.